ओके जी, आज हम बात कर रहे हैं रा की। चाइनीज़ ज़ुबान में भी रा और भी बहुत सारी ज़ुबान में जिसको रा कहा जाता है। और हम कहते हैं सूरज, चंदा, सूरज, चांद, सूरज। कितनी फिल्में हैं और इंडियन फिल्मों में तो ख़ास तौर पे नाम फिल्मों का सूरज होता है। और ये कुछ सोलर सिस्टम की पिक्चर है। मरकरी, वीनस, अर्थ और बहुत कुछ आज जानने को मिलना है। हमारी रहनुमाई के लिए अन्नान साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। Oh, hello, I didn't see you there. I was just checking out the ones you done. Look at that. Everything here is done. ओके, The entire house, except for the sun. So, या time for the sun. वाओ। So, let's start with what is this up? ओके जी, मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर हमारे जो रहनुमाई के लिए अन्नान दी स्पेशलिस्ट और माशाल्लाह ये सोलर सिस्टम में मुझसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं। 93 मिलियन माइल हमारी अर्थ से सन का डिस्टेंस है, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और 150 मिलियन किलोमीटर भी। ठीक है जी। और हमारा जो सन है इसके अंदर कितनी दफ़ा अर्थ आ सकती है? 1.3 मिलियन टाइम। ओ माय गॉड। क्योंकि Oh my god. अगर आप एक बात सीखो कि सन के हम डायमीटर की बात करें, जस्ट लाइक दैट, तो Let's 110 अर्थ तो इस तरह आ जाएंगी। और दिस इज 3 डायमेंशनल, तो 110 का क्यूब ऑफ कोर्स कितना आएगा? 1.3 मिलियन। अब रेडियस ऑफ सन ये है 7 × 10⁸ मीटर। और सन की स्केप वेलोसिटी 615 किलोमीटर पर सेकेंड। वेल, अर्थ की खाली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, मून की 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब ये स्केप वेलोसिटी होती क्या है? जैसे कि अर्थ से किसी बॉडी को बाहर जाना चाहिए तो उसकी स्पीड स्केप वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए। जी अन्नान साहब। actually you can count it. ओके जी। Escape velocity क्या है? मगर आपने बताया। अच्छा, मैं बताता हूँ। अब देखें ना, स्केप वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे पता है। ओके ओके, आप अब इसकी मजीद डिटेल बता दीजिएगा अन्नान साहब। अब हम कहते हैं कि हमारे अर्थ का डे जो है वो 24 डेज ओवर का होता है, लेकिन सन में बड़ा चेंज है मामला। चूंकि मासिव बॉडी तो है नहीं, गैसेस बॉडी है, तो इक्वेटर पे इसका जो एक रोटेशन होती है एक डे, वो अर्थ के 25 डेज के बराबर होता है, और इसके पोल्स पे 36 डेज के बराबर होता है। 8 कंफर्म प्लैनेट, 5 डिवॉट प्लैनेट्स, अराउंड 10,000 एस्ट्रॉइड्स और 3 ट्रिलियन से ज़्यादा कॉमेट्स एंड आइजी बॉजी, जो कि नेपच्यून के भी बैक साइड पर है। और अगर आप देखो तो इसकी जो कोर पे टेम्परेचर होता है 15 मिलियन सेल्सियस, और तकरीबन 98 to 99% जो है मास सोलर सिस्टम का वो हमारे सन में ही है। और आपको पता है हमारा सन भी घूम रहा है, पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, और उसके साथ हम भी घूम रहे हैं। और सन की जो स्पीड है 5 लाख माइल पर आवर, यानी 8 लाख किलोमीटर पर आवर। तो ये सेंटर ऑफ गैलेक्सी में अपना एक चक्कर इतनी तेज स्पीड के बावजूद कितना अरसा लग जाता है? 225 से 250 मिलियन लाइट ईयर, जिसको कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं। हमारी अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, लेकिन सन का है 274 मीटर पर सेकेंड। ओके अन्नान What साहब, is this? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, The जैसे G. कि हमारी अर्थ का है 9.8, मून का है 1.6। Yeah. जी, स्मॉल जी। Okay. So, so he was saying earlier, huh? With the escape velocity. Basically, escape velocity, huh? यस, Is काइंडली the एक्सप्लेन speed इट। you have to move at, huh? To get to leave the gravitational pull or something. So this is the ओके, Earth's gravitational. If you're walking, then if you jump, you can't escape it because you'll be pulled back down, and then you can't, and then you have to try again to escape the escape. But if you have, let's say, a rocket ship, huh, that's moving fast enough, you can escape the Earth. Yeah? So, but on the sun, this escape velocity is insane, is much higher due to its higher gravity. I had been holding that, I was holding that boom marker for too long. So let's say the sun was, well, let's say you could actually theoretically survive on the sun. Jump, you just basically wouldn't move.
But you would need a rocket ship that's moving 615 kilometers a second to escape the sun. And basically, that's how what we meant. That's basically what escape velocity. This is the gravitational radius, basically. Now okay. So this is, of course, these checks are just here to show you which ones you already do. Now, Kindly explain this diagram. Yeah, that's what I'm explaining. These checks, right here, Yeah. You see these checks? These are checking off the things in the solar system we've already made videos on, Mercury was the previous one. Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And the sun is the last thing left. Even then certain Vesta, and see, I think we've done Vesta, right? Yeah, you are right. Yeah, okay. And the asteroid belt too, right? Asteroid belt, yes. Okay, so Around 10,000 asteroid ball. And this right here is basically just showing you the entire solar system, and this is the sun. It makes up 98 or 99%. Yeah. The remaining mass is mostly Jupiter and Saturn, and then if you take all of the dust in the solar, all of the asteroids, all of the comets, it's all of the planets, all of the dwarf planets, all of their moons, they would only make up they would not make up for much of the mass of the solar system. Yeah, maybe less than 1%. 99% is it's actually around, maybe I think 99.8%. Yeah. So they would only make up 0.2%. Okay, यानी अगर हम सन को, जुपिटर और सैटर्न को माइनस कर दें तो 0.2% सोलर सिस्टम का मास रह जाता है. नहीं, जुपिटर एंड सैटर्न को काउंट करें. जी, जुपिटर सैटर्न को सन के साथ काउंट करें तो बाकी ओनली 0.2%. नहीं, जुपिटर एंड सैटर्न को भी काउंट करके 0.2%. ओके, दैट्स ग्रेट मिस्टर अन्नम. Which shows exactly how enormous the sun is. Oh wow. How big is that actually though? How big did I make this circle in actual तो size? और इसकी स्केप वेलोसिटी भी इतनी ज़्यादा है कि फर्ज करेंगे कोई पहुंच भी जाता, सूरज आँख नहीं होता, एक नॉर्मल प्लेनेट जैसा होता, तब भी उससे बाहर नहीं निकल सकता था. मैं एक्सप्लेन कर रहा था जब मैंने जब बोला था if you could even like survive on the sun, मैंने बोला था ना escape velocity. Okay. जब मैंने एक्सप्लेन करा था उसकी. And same thing about mass. अगर आपका मास यहाँ अर्थ पे 100 है तो यहाँ 980 होते हो, क्योंकि वेट क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो सन पे तो आदमी का मास भी कितना ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज इट्स वैल्यू इज मच ग्रेटर देन 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So your mass increased 28 to 30% time at sun. And what is this? I was trying. What number did you say for like your weight, on Earth? 28 times. The Earth what would your weight be on Earth for? If it is 98 Newton. 98. Newton, yeah, 100 Newton. What is the Newton? Newton is a unit of weight. How much is it? How many kilograms? No, they are not directly related. Actually, if you multiply mass with acceleration due to gravity, we get weight. So it means that 1 Newton is equal to 9.8 kg in this sense you say. क्योंकि because आप mass को multiply करोगे जब 9.8 से तो weight आएगा हमारी अर्थ पे. लेकिन यहाँ पे क्या है, कैसे आएगा वेट? मास को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 274 से. यस. Is that 274? Oh, yeah. 274. ये मुझे L लग रहा है. नहीं, this is 274. मुझे L लग रहा है. And on moon it is only 1.61, and Jupiter it is 25.8. And also, and now let's talk about the probe. Yeah, that's very important. Hold on, which probe though? Let me tell you which probe I'm talking about. It is a probe known as
the solar probe. Yeah. Let's pretend this is how it looks, even though it probably looks completely different. But the solar probe was made specifically for a mission to the sun. Huh? Wait, it was sent to the sun. Huh? Yeah. And what part of it did did it go to? What part of it did it go to? Outer part, outer layer, And just corona. this had the corona. What is its temperature? Around 10,500. That's its surface's temperature. Yeah, surface temperature. Okay, so never mind. Hold on, wait. Let me actually just grab this and fill that in with red. Hold on, let me fill this in with red. I won't even. I'll just do a bit of it, but it won't be an inner circle. Hold Okay. on. You can tell them a आउटर bit. सरफेस तो जी इसकी कार्बन एटम पर मुश्तमिल है और देखो एक तरह से सूरज को छूने का मिशन है क्योंकि अब हम सूरज के मुतालिक ज़्यादा जानना चाह रहे हैं अरबों साल से जल रहा है मज़ीद अरबों साल से तक रहेगा यहाँ पे होता है फ्यूजन रिएक्शन जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो ना सिर्फ हाइड्रोजन की मदद से हीलियम मिलती है बल्कि फोटोन भी रिलीज होता है और ये फोटोन हजारों साल सूरज में रहने के बाद हमारी अर्थ पे मिलता है उससे हमें लाइट मिलती है Yes. Okay. So basically, while you may think we see the sun 8 minutes ago, because that's how long it takes for light Yeah. to travel from the sun to the earth, but in reality, we probably see it a lot younger/older version of the sun because basically, let me make an example chart. So, this is the sun, alright? This is its core. When it fuses hydrogen into helium, it releases protons, which go in a random path by colliding into, I think it's plasma, right? Yeah. And then until they actually finally get out and then go towards the planets. Yes, यहाँ पे thousands of years लगते हैं और अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट 20 सेकेंड. Yes, so that means we see it many years ago, Yeah. And not actually 8 minutes ago. And also, fun fact, if the sun disappeared for 5 seconds, in the time that it disappeared, you would still see it. Because the light would still be there. And then 8 minutes later, after 8 minutes after it appeared, it would disappear. It would appear as if it disappeared for 5 seconds. And then everything would be back to normal. और बिल्कुल जी जो हमारे सन्स हैं बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर हैं हो सकता है वो अब तक खत्म भी हो चुके हों वो स्टार्स क्योंकि उनकी लाइट अब तक हमारे पास आ रही है और आती रहेगी. Yes, and also its closest neighboring star, Proxima Centauri. We've done a video on, Yeah. Proxima Centauri. It's actually 3 stars. Proxima Centauri is, I think, the smallest one, right? Yeah. Yeah, but it's the main one of it because it's even the name of the entire system on that. And it's about 4 light years away. Most stars in the universe at least in the Milky Way galaxy are about 3 point something to 4 point something light years apart. From each other. It's never. The only exception is ones between with a void in between, Yeah. Like I think it's called the Eridanus super void. Yeah. Which is about 1 billion light years across. Yeah, that's very strange thing. Some people suspect that it might have been caused by a collision with another universe if the multiverse is real. Yeah, of course, I think it is real. और अगर मल्टीवर्स है तो इसका मतलब है कि एक पैरेलल यूनिवर्स भी है और वहाँ पर भी एक अन्नान और अमीन इस तक मौजूद हैं और वो दोनों इस वक्त there's a chance that in an alternate universe we might actually have done the sun already and actually would be on Earth. That's a possibility in an alternate universe. And there is also a possibility in an alternate universe where people are living on Saturn. Yeah. Just और एक बात बड़ी दिलचस्प है makes
infinite universes be possible to exist? अब देखिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 93 मिलियन लाइट ईयर का है, और एक लाइट ईयर में 63,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है ये अराउंड 250 या 270,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है एवरेजली हमारे सन से, और नेपच्यून खाली 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब यहाँ सोलर सिस्टम के डायमीटर के मुतालिक भी क्वेश्चन आता है Yes, कि hold कितना on. है। Okay. So Different theories. Hold on. The idea, it's suspected that the entire solar system. This will be represent the Oort cloud. Just I'm skipping every other part, huh? This is the Oort cloud, all right, huh? Which is about, and I guess the heliosphere too, which is I think the same as it, huh? They're the same, right, huh? Are the Oort cloud and the heliosphere is the same, huh? Yeah. Okay, so the heliosphere or the Oort cloud is the outer layer of our solar system, and so we can use its length in its spherical shape to determine the size of the solar system, and this is about one point question mark. Basically, it's it's around 2 light years, huh? या मे बी, मेरा भी यही ख्याल है। It's around 2 light years across. I think that's the size of the heliosphere or the Oort cloud, whatever you want to call it, which is the outer layer of our solar system. Anyways, let's talk about the solar probe. या इसके मुतालिक लोग जानना चाह रहे हैं अदनान साहब आपसे। Oh, hold on. या पीपल वांट Hold on. About Wait it. 1 second. Let me remake the sun here. Good, so I got rid of it here on accident. Why did it look like a heart a few seconds ago, like a real biological heart? Let me just go that here. Alright. Now, okay, let's talk about the solar probe, huh? So you tell them a bit about it first. देखिए, सोलर प्रोब पे अब सवाल ये पैदा होता है ये इतने टेम्परेचर को कैसे बर्दाश्त कर पा रहा है। हाँ. तो इसका जो फ्रंट है वो कार्बन कार्बन का बना हुआ है, और कार्बन कार्बन के बनने से बहुत ज़्यादा ये पावरफुल हो जाता है। लेकिन फिर भी इतना टेम्परेचर, तो देखो बात ये है कि इसके जो बैक साइड पे वहाँ मुसलसल इसको कंटिन्यू पानी मिलता रहता है। इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी की गई है जिससे मुसलसल ठंडा रहता है, और ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम है जो यहाँ पे किया जा रहा है, और इससे बहुत कुछ हमें सूरज के मुतालिक जानने को भी मिलेगा। देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, ये हमारी अर्थ है, ये सूरज है, कभी वीनस सामने आ जाता है, कभी मरकरी, कभी चांद सामने आ जाता है, तो कभी बादलों सामने आ जाते हैं, और सूरज की जो एनर्जी है, और ज़ाहिर है दिन रात, एक्चुअली रिलेटिव में दिन रात कुछ नहीं होते ना, क्योंकि सूरज गरूब होता है ना तुलू होता है। ये तो हमें अर्थ से लगता है कि सूरज गरूब हो गया या तुलू हो गया, अर्थ की रोटेशन की वजह से। वन साइड पे ऐसा नहीं होता कि अगर एक जगह पे नाइट होगी फिर हर जगह ऐसा होता है कि एक हाफ अर्थ पे दिन हो रहा है और दूसरा हाफ नाइट पे। यस, तो अब इसका हल ये कर रहे हैं जो चाइना वाले कि यहाँ पर एक स्टेशन बनाएंगे मसनूई सूरज। And we're currently in the day half of it because it's day. या उसके बाद क्या होगा कि 24 घंटे उसको लाइट मिलती रहेगी, सोलर एनर्जी, और उसको डिफरेंट तरीक़ों से अर्थ से पहुँचाते रहेंगे। ख्याल ये है कि 2040 में एक बहुत ऐसे स्टेशन बन चुके होंगे स्पेस में जो सन की एनर्जी को डायरेक्ट दे रहे हैं। तो इसकी स्टडी के लिए हम ने सोलर प्रॉब भेजा, और इससे बहुत कुछ सन के मुतालिक जानने में हेल्प And मिल रही है। also, you see this. Also, hold on, let me make another sun somewhere, huh? Right here, okay. This should work. So, this right here, is the sun, okay, huh? यस, And hold on, let me make it a bit bigger so that it kind of matches that one in size. Not this one though, this one is too big. And there we go. Okay, I'll fill in the rest in a bit further. And there we go. Okay, almost filled in. There we go. Okay, so it has, you see this right here, huh? You see this, huh? Weird thing that looks like kind of a door, huh? Why aren't you replying properly? यस, 100% राइट। Huh? So this right here, huh?
is actually what's known as a solar flare. Hold on, I'll be right back. I'll tell you about the solar flare. You just tell them about the other things. ओके जी अब Tell them about the solar probe a bit more if there's any more facts. जी, And बिल्कुल। then I'll tell about this. तो ये सोलर प्रॉब बहुत इम्पोर्टेंट फ्यूचर में होने वाला है, बहुत कुछ हमें इसके जरिए पता चलने वाला है। वैसे सूरज की एनर्जी खत्म कब होगी? आफ्टर 4.5 लाइट ईयर। जी Okay, हेलो। light year, billion. बिलियन ईयर्स। Okay, I'm back. Huh? So, this right here is what's known as a solar flare. Huh? या These are violent outbursts of energy, basically, huh? That happen on the sun, of course, solar. And they are so big, huh? That they can fit the entire. What can they fit the entire of? Huh? The entire Earth, huh? Inside of them, ओह नो, huh? दैट्स how इनक्रेडिबल big थिंग। these are. That's how big these are. They can fit the entire Earth. The sun is insanely big. Huh? Let's remove. वालेकुम सलाम। ठीक, Oh, wait, no, not that one. That's another one. अब देखिए एक बात और कि जब ये सूरज की एनर्जी खत्म होने वाली होगी तो इसका साइज बहुत बढ़ जाएगा Yes, and it will और eat इतना both- बड़ा हो it will eat जाएगा कि Mercury, Venus, and potentially Earth. Earth isn't a confirmed जी जी one that मरकरी, वीनस, it- अर्थ hold सब on, इसके अंदर hold चले on. जाएंगे। It's confirmed that it will eat Mercury and Venus and it grows, Yeah. but it's not fully confirmed if it will eat Earth. Huh? Earth is just a possibility there. Huh? It will grow to 256 times its current size. Huh? 256 times. Huh? ऑफ कोर्स। Insanely big. Hmm? Huh? जी बिल्कुल। So, is that it? Is that all? Huh? दैट्स ऑल। Huh? So this also I forgot to write it, but the corona of the Earth, not the Earth, the Sun, or its surface basically is 10,000 degrees Fahrenheit, or about 5,000 degrees Celsius. Huh? या Also, is Kelvin low or high? Because it really confuses me, huh? 0 Kelvin is like, what is it? 0 केल्विन इज इक्वल टू Absolute 270। zero, absolute zero. Absolute zero. Huh? But like, but higher Kelvin is equal to pretty high amounts of temperature. So is Kelvin high or low in amounts? ओके, और कोई बात बतानी है अनंत साहब? And no. Goodbye. गुड बाय। Hold on, wait. Goodbye. गुड बाय। No,